सिंसियरिटी एंड इंटीग्रिटी काउंसलर से प्रॉब्लम टा को एज अ मेजर प्रॉब्लम हिसाब रे कंसीडर करिवो इंटीग्रिटी मींस प्रोटेक्ट हेला हेला इंटीग्रिटी इश्यू माने कहा डाटा कहा को मु शेयरिंग करि परिबेनी कहा इंफॉर्मेशन कहा को शेयरिंग करिबेनी फ्रीडम ऑफ चॉइस जेतु मु कहले ऑप्शन वाइज ताको एते फ्रीडम देबे से निजर ऑप्शन टाको निजे चूज करि परिबो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट अर्थ होची ताको एते सेल्फ डेवलप करिवि जे ता निज भीतर कॉन्फिडेंस आसीबो बुझला जेमति कि हमें एग्जाम रो डर केमति हमें पकोचे एग्जाम करि परिबो होची तो ये क्वेश्चन जब बार बार करके चले तो मैंने अरे ये क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन दे की मार्क पाइछे आउ डर लगे ना अरे क्वेश्चन हमें करि गए प्रिपेयर वेल प्रिपेयर तो एम्पावरमेंट सेमति करा छी सेंस ऑफ मोरालिटी हमें जो टॉपिक ऊपर डिस्कशन करूचे ता भीतर ही हमें डिस्कशन करियो नॉट द अदर फैक्टर सेंस ऑफ रेस्पेक्ट बोथ हैविंग ए रेस्पेक्ट टू ईच अदर वार्मथ एंड जेन्युइननेस कहा पाखरे किछि अन एथिकल जिनस पाइबार नहीं आमे केवल टॉपिक ऊपर ही हमें डिस्कशन करियो ओपन माइंडनेस एंड सिंप्लिसिटी फेयरनेस and faithfulness. So these are the factors that is required for a counselor. One point that is very important here is that those counselors who are not clear about their value, belief and ethics as well as about the legal responsibility towards their client can practically cause harm to the rather than solving the problem. जदि ए सब प्रॉब्लम तंकर अछि जदि मु निजर मोराल ए वैल्यू को न रखीबी सिंपलिसिटी न रखीबी ताले कौन हबो मु ता प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देबा बदले आ गोटे बड़ प्रॉब्लम ता पई करेबो तो हम स्त्री नै के आस्ते मु स्वामी जा गई तो स्त्री को स्त्री जाई तो स्वामी को से घर जे तल से हणा कटाई के मर्डर बुझो किंतु मु दी जा को मिसे भी कळ ये तो विषय भलो कहला तू दे विषय भलो कहला तम भीतर एटा माइनर ए जिंसटा अछि आकु तब जेता जिबे जे बस खुशी दो किंतु ता विरुद्ध आ विरुद्ध पैसे तो विरुद्ध एक काले कहला कि घर गले पाटिया पाटी के मरा मरे की तार मर What are the type of counseling? One is direct counseling, indirect counseling, individual counseling and group counseling. So direct counseling is what? In this type of counseling the client take the appointment with the counselor and then as per as the scheduled date and time meets him in his personal chamber after which the actual process of counseling begins. मुतापा करो टाइम डेट सब नहीं के चैम्बर को जीबे ताको मीट करिवे जेमते हमें डॉक्टर अपॉइंटमेंट करू द अरेंजमेंट इन इज सच दैट both of them sat facing each other they are in a comfortable position then the counselor initiate the process by taking an active role तापर दी जन सामना सामनी रहिबे सामना सामनी रहला परे सी तापरे एक्टिव रोल नबो beginning with the introduction of the client and his family member to presentation of the problem तो प्रथम में स्टार्टिंग कोन करिवो सीए कोन का फैमिली विषय रे पचारिवो तापर हमर काउंसलिंग स्टार्ट हेतो sharing the personal information to its actual description the counselor continue to play dominant role तापर आस्ते 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 ता विषय ता परिवार लोकंकर माने तार ता परिवार लोकंकर व्यू ता केमति अछि ता नजर रे ता परिवार लोक केमति ताको जानिबार अछि ए सब कला परे तापर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ rapport is the first step of any kind of counseling फर्स्ट ऑफ ऑल होचे हमें ता ऊपर rapport बिल्डिंग करियो माने बिलीवनेस हमें फैक्टर ता क्रिएट करियो जे से जो क्लाइंट जो आसीथिबो से तम ऊपर विश्वास करियो because unless the client develop the trust and confidence on the counselor in the first meeting he and she will not prefer to share any personal information जदि मो ता ऊपर कोनोसी कॉन्फिडेंस कोनोसी माने ट्रस्ट जदि हमर आसीबनी ताले मो निज प्रॉब्लम ताको शेयरिंग करि परिबे ताले हम प्रॉब्लम ता केबे शेयरिंग होबो नै द पर्सनालिटी ऑफ द काउंसलर हिज कम्युनिकेशन स्किल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन seeking clarification etc एटा केमिति आसे पर्सनालिटी ऑफ द काउंसलर पर्सनालिटी कोन थिबो तार कम्युनिकेशन स्किल थिबो से केमिति व्यवहार करथिबो तार स्किल केमिति थिबो क्वेश्चन को माने इंटेलिजेंस हिसाब से क्वेश्चन पचारि के आंसर पाउथिबो ए सब डिपेंड करे
आउ से हिसाब रे कौन हुए ना जो क्लाइंट आसी थे तारा प्रॉब्लम टा शेयरिंग कर create the first impression in the client. If the counselor becomes successful in his approach, then the actual counseling session has started. तो प्रथम जिनस हला इंट्रोडक्शन रे रहिबो ओके तापरे निज निज भितर गोटे फेथनेस क्रिएट करिवे तापरे एक्चुअल काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो दिस इज मोर ऑफन ऑन द इंटरव्यू सेशन विथ द क्लाइंट which help the counselor to collect the detailed information about him but certain skills are also required at the stage on the part of the counselor like paying the attention to the client the client किसी कहउथिबो मु याडे को मुह करके अनुथिबि याडे साडे मुह करथिबि आई कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड जदि हमर आई कांटेक्ट नथिबो तो हमें क्लास करछे हम समस्त को चाहूची आई कांटेक्ट रहछ आई कांटेक्ट रहले हमें भाबुचे नै सर हमर प्रति अटेंशन नथु जदि मु आई कांटेक्ट न करबी तळ को मुह करके करबी एटा इंटरैक्टिव होबन बुझिला कि नै counselor paying the attention to the client, listening to him, encouraging and empathizing and questioning him in such a way so as to create a positive impact to the client. किछि क्वेश्चन पचारिबो ताको एनकरेज करबो कोनोसी काम करिया पय तो ए सब हेले कह हबो ता ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट ना ये लोक मते एनकरेज भी करोची एम्फासाइज भी करोची आ प्रॉब्लम सॉल्यूशन पय किछि टिप भी मते दउ दिस इज प्रैक्टिकली मेक द काउंसलिंग प्रोसेस more effective. Next step of direct counseling is that identification of the problem. First, our interaction सरीगला, trust building सरीगला, तापर हमें problem टा को analyze करिवा. Nature of the problem. प्रथम हमें problem टा केमती को प्रकार problem टा को analyze करिवा. Nature और personality type of the client. से problem पे से लोकोटा actually it is a genuine problem or it is the only the problem that the client is creating. ओके जेन्युइन प्रॉब्लम हम जंती कहबा बाते आसेला पानी आसीबो जेन्युइन प्रॉब्लम केम पानी आसुनी विरक्त हेबी करबी तो एटा जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्यूशन किछि नै नेचर ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन तो ए को सिचुएशन हिसाब रे तार प्रॉब्लम ता हैला अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन एबे को टाइप लाइफ से मेंटेन करूची ताकू भी देखिया पड़िबो नोइंग द गोल्स सेट बाय द क्लाइंट इज प्रिफरेंस एंड चॉइस से कोन चाहूची मो कोन चाहूची सेति पय मो पाखु आसुची आ कोन गोल रखीची आफ्टर काउंसलिंग प्रोसेस से कोन अचीव करिया को चाहूची सेटा भी मते जानिबा दरकार एनालाइजिंग देयर 5 फैक्टर इन वेरी इंपोर्टेंट इन अचीविंग द टारगेट both the client and the counselor jointly devise ways to achieve the targeted goal however while achieving the goal the theoretical knowledge of counselor as well as suitability of the client to be oriented play very vital role. The final step is that administration of different tests ranging from psychological tests, personality test to different type of aptitude tests. जेमति कि हमर पर्सनालिटी टेस्ट हम जो करथिले चैप्टर रे तो एवला तापर हम ताको टेस्ट करबा जे ए लोक एक्चुअली को टाइप रो पर्सनालिटी ता पकरे अछि. The main aim is to access the strength and weakness of the client to the goal set by him. तार कोन स्ट्रेंथ अछि कोन वीकनेस अछि ताको प्रथम हमें आइडेंटिफाई करियो. However, today direct counseling is used mostly for the choice of a career, job, vocational selection and placement. Okay, placement पे हमें यूज करूचे चाकरी क्षेत्र रे व्यवहार करते टेल मी अबाउट योरसेल्फ इंटरव्यू रो प्रथम क्वेश्चन बुझे तापर तमे काहे की कंपनी रे जॉब करियो चाहू छ हां व्हाट विल बी यू सी आफ्टर नेक्स्ट 5 इयर्स 5 वर्ष पर तमे कोडी देखियो अपनी जो चाहू छ ओके सो दीस आर द क्वेश्चंस एटा सब आछी एटा हिंदी होए ना डायरेक्ट काउंसलर रे नेक्स्ट होची indirect or non-direct counseling or more popular is the name of the client-centered counseling developed by the famous American psychologist Carl Rogers. This therapy is the most frequently used therapy that is coming under humanistic therapy. Carl Rogers the main proposition of
psychological and behavioral result due to faulty life experience, inadequate perception of oneself, faulty experience. ମାନେ ବଞ୍ଚିବା କଥା ଯେମିତି କି କହିବା ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଲାଇଫ ରେ ଆମେ ରହିବା ତାପରେ ଆମର କଣ ରହିବ ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଲାଇଫ ରେ ରହିକି ଲୋନ କରିବା ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ବୁଲିବି ଚପର ଯିବା ଓକେ ଏକ ତ ଚପର ରହିବାକୁ ଏଠି ଜାଗା ଘରେ ଚପର ରଖି ଗାଡି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବି ଓକେ ପଇସା ପାଇଁ the main perspective of Rogers was that faulty life experience, inadequate perception of oneself. ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନା ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବ. This is in turn gives rise to the problem, gives rise to development of a feeling and low esteem for which person is not able to achieve something that he and she actually can. Apart from his personal experience, lack of motivation and interest in managing his daily assignment. মানে তারা যাহা daily তাକୁ ସେ assignment କରିପାରିବ ନା. Faces the problem in relationship and exhibit adjustment problem. This type of counseling is called as the non-directive because of the counselor play a passive role in the entire process. Rather, he create a condition for the client to take up the active role. He was create an environment of acceptance, warmth, unconditional positive regard to the client to help him or expressing his deepest emotional feeling, conflict, and other inhibition which block the process of self-actualization. ए जगह ताको डायरेक्ट काउंसलिंग करा जाए नहीं इनडायरेक्ट वे रे ताको मोटिवेट करा. The main purpose of this type of counseling is to remove the blocks that are created due to the faulty analysis situation, people and relationship. This is also called as the client-centered therapy because the client has to do everything to get rid of the problem, conflict, wrong billing system. एठी काउंसलर एठी किछि करिवनी क्लाइंट ही करिवो. क्लाइंट को चेताइबो पड़िबो जे तू जो जो काम गुडा करूछु बा जो जो एंटीसिपेशन करूछु एंटीसिपेशन सब भूल बुझिल क मु करि परिबिन एटा मो द्वारा हबनी एटा मु कंप्लीट करि परिबिन त एटा होसी क्लाइंट एंटीसिपेशन ताको सेम काउंसलिंग कर जे तू करि ओके हम ग्रुप करिबा ग्रुप काउंसलिंग अंडर इंस्टा सॉल्व करियो. The counselor encourages to release his pent up emotion freely before him to experience a state of relaxation. The counselor job is not to interfere to question to interrupt in the middle of the conversation, but to allow the client to express freely without any inhibition and specification. Counselor जो क्लाइंट को थिबो क्वेश्चन पचारथिबो बा क्लाइंट जो क्वेश्चन पचारथिबो से क्वेश्चन जे ताको रोकिबोनी ताको फ्री प्रोवाइड करिवो से ता मनरे जा जा सब क्वेरीज अछि से क्वेरी सब पचारि पाइबो. The client thus is given full independence and opportunity of insight to his problem, to analyze his emotion, conflict, which is ultimately help to remove the various blockages that have been created over a long period of time. This ultimately creates a feeling of self-actualization of the client. A comparison between relative effectiveness of both directive and non-directive counseling indicate better benefit under the latter that of the former type of counseling. In both the type of counseling, the role of the counselor is very important. There is no doubt, but the approach and the strategy used by the counselor is different. However, the success of the counseling technique depends a lot of knowledge, skill, approach, and behavior of the counselor. जितना indirect counseling करा जाए, the skill of behavior बा knowledge थी दरकार. Indirect counseling केमती हबो? तर मु तुमको motivate करिवि पाठ पढ़िया पे. So I am not telling as a person wise. मु कहिबि जे एई भली गोटे पिलाटे थिला एमती पढुतिला, एई भली स्टेज देकी जाउतिला. तो से एई प्लान आउट कला जे पढी के से रिजल्ट करी. तो एटा मु ग्रुप रे कहिली किंतु गोटे स्पेसिफिक पिला पई कहि.
तो से पिला से भाबिला कोन ना एटा सर क्लास रे कहिचंती किंतु जो पिला से तार निज प्रॉब्लम को से प्रॉब्लम से तो रिलेट करि पारला से सेटा जदी सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन हिसाब पकेला से बेनिफिट सेटा डिपेंड करे काउंसलर ऊपर से केमिति से क्लाइंट रो प्रॉब्लम को एड्रेस करिवो जे कि क्लाइंट भी जानि परिवोनी जे मते डायरेक्टली एजेंट से कहवा जाउ एटा पासिव वे रे ताको कहवा बुझिला कि नहीं इनडायरेक्ट वे रे ताको कहवा जीवो जे क्लाइंट से ऑटोमेटिक बुझी परिवो जे एक पॉइंट ता जोटा कहवा गला एटा मते ही कहवा गला इन द क्लास बट समस्त कहीं जानी परिबेनी जे एटा काहा को बेस करके कहवा बुझिला कि नहीं non-directed counseling is still used today by many counselors, but the trend in counseling today is favor using uh, electric approach. Okay, electric approach instead of strictly adhering to the particular counseling technique. This reason being difference in natural problem, nature and client of the nature of the situation. The direct counseling gala, indirect counseling gala, individual counseling kon asibo. In source of counseling, only one individual is counseled at a time by the counselor. The step used by the individual counseling is same like that in group counseling. In general, there are three main stages counseling like stage initiation, action or working stage, termination or final stage. तीनटा स्टेज देखि जीवो इंडिविजुअल काउंसलिंग स्टेज क्रिएशन एनवायरनमेंट क्रिएट करिवो वर्किंग स्टेज काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करिवो तापरे एंडिंग करिवो गोल दबो ए गोल रे हमें एक गोल हिसाब रे हमें जीवो however the most important step in the counseling process that establishment of rapport हमें जतले प्रथम कंडीशन टा पढले प्रथम काउंसलिंग स्टार्ट हला कोठी रैपो बिल्डिंग करिवा रैपो बिल्डिंग माने ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करिवा एठी भी सेम ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो बिटवीन द क्लाइंट and the counselor. It is very important for the success of counseling, starting from the identification of the problem to analyze interpretation of the problem, the suggestion idea given by the counselor. प्रथम जिंस रहिला identification of the problem, analyzing the problem, then तार solution जोरा दिया जाय. Each step is important in any type of counseling process. The counselor must have sufficient knowledge as to where to use the strategy तो को जगह रे को strategy यूज करा जीवो तेरा काउंसलर रा नॉलेज रे थिबा दरकार इन जनरल इंडिविजुअल काउंसलिंग इज प्रिफर व्हेन द मैटर इज वेरी पर्सनल जतबे बहुत पर्सनल थिबो से जगह रे इंडिविजुअल काउंसलिंग हमें व्यवहार करियो कोटा को चैप्टर दरकार कोन कोटार दरकार कोन सोशियोलॉजी रो अछि इस पेपर अछि जे किंतु तको हमको ट्रांसलेट करके दो हमको चैप्टर वाइज कहि दो हम बाकी पढ़े दो हां हम साइंस दुई तीन दिन में गोटे चैप्टर वाइज करी पढ़े दो यूनिट वाइज वो जो पीडीएफ करी पठे दे फास्ट में हार करी के देखो आगो लॉन्ग क्वेश्चन गुडा एग्जाम पैटर्न ମାନେ ଯେମିତି 2 3 ମାର୍କ୍ସ ଆସି ଆଉ एमसीक्यू ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ଲାଗୁଛି ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन नेगेटिव है साइकोलॉजी पॉलिटिकल भी इंग्लिश रखा होती ठीक है हम बात करें
Okay, so next class में पढ़िबा कोटा ग्रुप काउंसलिंग टा पढ़िबा जो आज जो नोट लगा ये फोटो उठे नियो रे पठे देबो कर दीचु तो कर दउ ठीक है आ गोटे लंग क्वेश्चन अधा डका है सेटा मु देखु कोन से दिलो आता होइतला आरो बाबा होइतला रखि दवा साडी क्लास में वाइट थी वाटर भी ଅଛି वाटर फिजिक्स ଅଛି वाटर तो ठीक আছে କାଲି ଏଟାକୁ ସାରି ଦବା ଗ୍ରୁପ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଅନଲାଇନ କି ଅଛ